নমস্কাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰে বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই ৰাজদীপ চেতিয়া ফুকনে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বৰ্তমানৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ গুৰুত্ব বৰ বেছিকৈ বাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা জীৱন আগুৱাই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰে আৰু বৰ্তমানৰ এই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যদি বহিৰাজ্যৰ কথা নকৈ অসমৰ কথা আপোনালোকক কওঁ তেনেহলে বহু শিক্ষানুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে যি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে সাজু কৰে বা তেওঁলোকক সেই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত বহিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ যিসমূহ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন বা যিসমূহ তথ্যপাতিৰ প্ৰয়োজন সেইসমূহ প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু তেনে বহু শিক্ষানুষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে বহু অনুষ্ঠান কৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ অসমৰ এই শিক্ষাখণ্ডত এটা নামৰ সংযোজন হৈছে আৰু সেই নামটো হৈছে আন একাডেমি আন একাডেমিৰ নামটো আপোনালোকে হয়তো বিভিন্ন সময়ত শুনিছে হেয়া লাগে বিভিন্ন ক্ৰিকেট মেচ চলি থকাৰ সময়তে হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনালোকে এই আন একাডেমি নামটো স্পন্সৰাৰ হিচাপে শুনিছে কিন্তু এই আন একাডেমিনো কি বা এই আন একাডেমিনো কি কৰে সেই সন্দৰ্ভতে আজি আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ শেহতীয়াকৈ অসমত আন একাডেমিৰ প্ৰথমটো চেণ্টাৰ মুকলি হৈছে এই আন একাডেমিও এতিয়া অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছু নতুন চিন্তা কঢ়িয়াই আনিছে আৰু সেই চিন্তাবোৰ অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিলাই দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে এই প্ৰয়াস কৰিছে আমি অনুষ্ঠানটোত আন একাডেমিৰ তিনিগৰাকী অতিথিক আজি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেওঁলোকক লৈ আমি আন একাডেমি সন্দৰ্ভত আপোনালোকক বহু কথা আজি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কাৰণ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে আন একাডেমিৰ সংজ্ঞাটো বা আন একাডেমিৰ বিষয়বস্তুটো বা নামটো যথেষ্ট নতুন গতিকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আন একাডেমিৰ এগৰাকী তেখেত শিক্ষক তেখেত হৈছে বিটেকৰ গোল্ড মেডেলিষ্ট তেওঁ আন একাডেমিত ফিজিক্সৰ শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছে তেখেত হৈছে মহেন্দ্ৰ সিং তেখেতক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ থ্যাংক ইউ স্যার তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে আছে আন একাডেমিৰ যিটো গুৱাহাটীৰ চেণ্টাৰ মুকলি হৈছে সেই গুৱাহাটীৰ চেণ্টাৰটোৰ যিগৰাকী চেণ্টাৰ হেড ফ্ৰেজল আদিব তেখেতকো আমি অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সোঁফালে আছে ফ্ৰেজল আদিব আপোনাকো অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম নমস্তে স্যার তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে আছে আন একাডেমিৰ ষ্টুডেণ্ট এক্সিকিউটিভ আৰু তেখেত হৈছে ষ্টুডেণ্ট এংগেজমেণ্ট এক্সিকিউটিভ তেখেত হৈছে সুভায়ু সেনগুপ্তা তেখেতকো আমি অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই তিনিওগৰাকী অতিথিক আজি অনুষ্ঠানটোত লৈ আমি আন একাডেমি সন্দৰ্ভত কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই সুভায়ু সেনগুপ্তাৰ সৈতে অসমীয়াতে কথাখিনি আগবঢ়াই লৈ যাম ৰাইজৰ বুজিবলৈ সহায় হোৱাকৈ কিন্তু মহেন্দ্ৰ সিং আৰু ফেজল আদিবৰ সৈতে আমি কথা বতৰাবোৰ হিন্দীতে পাতিব লাগিব তথাপিও আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ সহজ সৰলকৈ পাতিবলৈ কথাখিনি চেষ্টা কৰিম মই প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মহেন্দ্ৰ সিং सर प्राय सर ये आर एकेडमी का जो डेफिनेशन है ये आसाम के लोगों के लिए एकदम नया एक डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए बिल्कुल एक्चुअली सर मुझे ऐसा लगता है कि भारत का कोई भी ऐसा बच्चा जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होगा वो अन अकेडमी को नहीं जानता ऐसा नहीं है बिकॉज 2015 में अन अकेडमी शुरू हुआ था एक विजन के साथ कि इंडिया का हर एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्सेल करे बट उसे अपने घर से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े अपने घर पे ही बैठकर उसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाए और उसी के लिए इसी विजन को हम आगे बढ़ाते हुए जब आगे बढ़े तो 2021 में अन अकेडमी को इंडिया का लार्जेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म का खिताब भी मिला और अब राइट नाउ करेंटली सर हम इंडिया में मोर देन 60 सिटीज़ में मोर देन 70+ सेंटर्स हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं और हम गुवाहाटी में ऑलरेडी एक सेंटर इनोग्रेट कर चुके हैं और इस सेंटर पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लास 6th से लगाकर क्लास 12th में हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड जेई या जो आगे चल के इंडिया के बेस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बीटेक या एमटेक या जो भी पढ़ाई वो करना चाह रहे हैं उसके लिए अन अकेडमी इज़ हियर एट गुवाहाटी टू हेल्प यू आउट बेस्ट कंटेंट अब आपके शहर में है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ মই পুনৰ মহেন্দ্ৰ সিঙৰ পৰা আৰু আন একাডেমি সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম এবাৰ ফেজল আদিবৰ কাষলৈকে আহিছোঁ सर सेंटर ओपनिंग हुआ है गुवाहाटी में आप लोगों का प्लान क्या क्या है कैसा कैसा प्लान है
सेंटर को लेके? सेंटर को प्लान काफ़ी हमारे क्लियर है सर। हम सारे बच्चों के साथ, जो बच्चे अभी यानी गुवाहाटी में जो काफ़ी दूर दराज के बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उन बच्चों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे गुवाहाटी में ऑलरेडी हैं उन बच्चों को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हर चीज़ उनके लिए उनके हिसाब से चीज़ों को हम करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं उनके लिए कोचिंग पे, ये सारी चीज़ें हैं। ঠিক আছে, মই সুভায়ুষ সেনগুপ্তৰ কাষলৈ গৈছোঁ। আপুনি যিহেতু ষ্টুডেণ্ট এংগেজমেণ্ট এক্সিকিউটিভ, গতিকে মই এই গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ পেলাই প্ৰশ্ন এটা আপোনাক কৰিব বিচাৰিছোঁ। নতুনকৈ চেণ্টাৰটো আপোনালোকৰ অপেনিং হৈছে। গুৱাহাটীত এনেকুৱা শ চেণ্টাৰ আছে য'ত আপোনাৰ JEE বা নীটৰ কোচিং প্ৰদান কৰা হয়। তাৰপিছত আন একাডেমিলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব লাগিব। আপোনালোকে ভাবেনে যে আপোনালোকে বহিৰাজ্যৰ 60টাকৈ আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ আছে, তাৰপিছত অসমলৈ আপোনালোক আহিছে, আপোনালোক সফল হ'ব পাৰিব বুলি আপোনালোকে ভাবিছেনে? মোৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে আমি সফল হ'ব পাৰিম, কাৰণ কথাটো হৈছে আন একাডেমিৰ যোনটো ভিজনৰ কথা মহেন্দ্ৰ সিং ছাৰে ক'লে, ডেম'ক্ৰেটাইজিং এক্সেছ টু হাই কোৱালিটি এডুকেশ্যন। কোন এনেকুৱা অভিভাৱক থাকিব বা কোন এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থী থাকিব যোনে ভাল কোৱালিটি এডুকেশ্যন বিচাৰিব? এতিয়া যিহেতু আপুনি ক'লে যে এটা প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিস্থিতি ইমান বেছি উগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিস্থিতি, সেনেকুৱা পৰিস্থিতিত সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে বিচাৰিব যে আমি ভালতকৈও ভাল এটা প্ৰতিষ্ঠান পাওঁ, কোচিং ইনষ্টিটিউট যাওঁ, য'ৰ পৰা আমাৰ মানে প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি ইমান ষ্ট্ৰং হৈ যায় যাতে আমি মাল্টিপল এটেম্পট দিবলগীয়া নহয় বা মানে ওৱান শ্বট ট্ৰায়েলতে আমি হৈ যাওঁ। চবৰে সেইটো আশা থাকে। কিন্তু তাতকৈ উপৰিও গৈ আন একাডেমিৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান এইটো হয় যে আমি এটা চেঞ্চিটিভ আৰু মানে ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্ট, এটা পৰিৱেশ ক্ৰিয়েট কৰাত আমি বহুত জোৰ দিওঁ। এনেকুৱা নিবিচাৰোঁ যে যিজন শিক্ষাৰ্থী আমাৰ চেণ্টাৰলৈ আহে, পঢ়িবলৈ আহে, বহুত আশা আকাংক্ষা লৈ আহে, সিহঁতৰ ওপৰত এই শিক্ষাৰ বাৰ্ডেনটো ইমান বেছি হৈ নাযায় বা কোনোবা এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত পাছ কৰাত প্ৰেছাৰটো ইমান বেছি হৈ নাযায় যে তেখেতে নিজৰ আত্মবিশ্বাস, নিজৰ যিটো এটা মহত্ব যোনটো, সেইটো হেৰুৱাই পেলাই কিবা ভুল দিশত গুচি যায়। সেইকাৰণে বিচলিত নহয় যাতে। আৰু আমি কম্পিটিশ্যনটো কম্পিটিশ্যন হিচাপে ৰাখোঁ, সেইটো এটা নেগেটিভ মেণ্টেল স্পেচত যাবলৈ আমি মানে নিদিওঁ। আমি সেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বনোৱাত চেষ্টা আমাৰ চলি থাকে কণ্টিনিউৱাছলি। मैं महेंद्र सिंह सर पर ये विषय तो जानब विचारिम। गुवाहाटी में यूपी जो नीट और JEE का कोचिंग देने वाला इंस्टीट्यूट लगभग 100 से भी ज़्यादा है। बिल्कुल उसके बाद आर्न एकेडमी एस्टेब्लिश हुआ है असम में, उसका पहला सेंटर ओपनिंग हुआ है। आप ये क्यों सोचते हैं कि स्टूडेंट आएगा आर्न एकेडमी में, किस लिए आएगा? बिल्कुल सही सवाल है सर आपका, और मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन सुनने के लिए भी सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स वेट भी कर रहे होंगे। सर किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम में एक्सेल करने के लिए क्या चाहिए होता है? बेस्ट कंटेंट। एक किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, एक A to Z सारी डिटेल है, किसी एजुकेटर की आवश्यकता नहीं है, बच्चा पढ़ के भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन दैट टू विद द गाइडेंस। एक एग्जाम्पल से मैं हमेशा इसको बताता हूँ कि जैसे एक चौराहा है और इसके रास्ते कहीं भी जा सकते हैं। जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो चारों रास्ते वहीं पहुंच रहे हो। एंड इफ़ यू आस्क एनीबडी कि यार मुझे XYZ लोकेशन पे पहुंचना है, मैं किस रास्ते से वहाँ पहुंच सकता हूँ, तो देयर माइट बी आंसर कि चारों में से कोई भी रास्ता ले लो, यू विल रीच देयर। बट वी गेट कन्फ्यूज्ड एंड वी वोंट बी एबल टू टेक एनी ऑफ द पाथ, क्योंकि आपने ऑप्शंस बहुत रख दिए। वी एट एन अकेडमी बिलीव्स एंड वी प्लान आर करिकुलम, वी डिज़ाइन कॉन्टेंट इन अ वे कि हम आपको एक सिंगल रास्ता दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाते हैं, ग्रो करवाते हैं। वी जस्ट नॉट टीच इन टू द क्लासरूम। हम पढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखते होते कि कंटेंट आपको क्या पढ़ाना है, किन बिट्स एंड पीसेस में देना है। आफ्टर दैट बच्चे की लर्निंग के लिए वी गिव द DPPs, दैट इज प्रैक्टिस शीट्स, आफ्टर गेटिंग द क्लासेस ओवर, सो दैट बच्चे को उसे एज एन होमवर्क उसे सॉल्व करना है। वेरी नेक्स्ट डे वी क्रॉस चेक कि कितने बच्चों ने किया, किसने नहीं किया। जो करते हैं वो डाउट्स पूछते हैं, जिन्होंने अगर नहीं भी किया देन अगेन हम ये इंश्योर करते हैं कि हर बच्चा उस DPP को सॉल्व करे। एजुकेटर एम्फसाइज करते हैं। जब इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से वो नीट या JEE या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, वो एक्सेल करता ही है। इसी के साथ हर 21 डेज़ में, जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, बहुत ज़्यादा मायनों में सुनने में आता है कि देयर इज़ अ प्रेशर ऑन किड्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात हो जाती है। सर एग्ज़ाम को गेम बनाना होता है, एग्ज़ाम को फील कराना होता है। हम हमेशा वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हम एग्ज़ाम को आपका दोस्त बना देते हैं। इन अ वे
कि जैसा नीट का और जेई का पेपर होता है, जिस तरह का, जिस पैटर्न का, जिस सिमिलर क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स पर आपके हर 21 डेज में एग्जाम्स होते रहते हैं, रिपीटेटिव एग्जाम्स होते हैं। वंस द सिलेबस गेट्स ओवर, हम बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंसिव रिविजन प्लानर एंड प्रोग्राम के साथ आते हैं। जेई में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो हम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करवाते हैं। एडवांस के पेपर्स हम अलग से करा रहे होते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक बिफोर अपियरिंग टू द एक्चुअल एग्जाम, हम हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्स बच्चे के ऑलरेडी ले चुके होते हैं। सो दिस इज द मेन फैक्टर विच डिफरेंशिएट एन अकेडमी फ्रॉम अदर्स, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ओनली पीपल विल कम टू द अकेडमी सेंटर्स एंड दे विल एन्जॉय द लर्निंग प्रॉसेस। ঠিক আছে, মই আৰু কথা পাতিম, কিন্তু এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে। এটা খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতিলৈ অনুষ্ঠানটোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিম। খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ আৰু আজি আমি কথা পাতি আছোঁ আন একাডেমি সন্দৰ্ভত। আন একাডেমি এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা নতুন নাম নহয় যদিও অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ বাবে কিন্তু এটা নতুন নাম হৈছে আন একাডেমি। সেই আন একাডেমি এতিয়া অসমত উপলব্ধ। সেই আন একাডেমিৰ এতিয়া নতুনকৈ এটা শাখা অসমত মুকলি হৈছে আৰু আন একাডেমি সন্দৰ্ভতে আজি আমি কথা পাতি আছোঁ। আমাৰ তিনিগৰাকী অতিথি আছে, মহেন্দ্ৰ সিং, ফেজল আদিব আৰু সুয়াজ চুভায়ু সেনগুপ্তা। আমি তিনিগৰাকীৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। আমি এবাৰ ফেজল আদিবৰ কাষলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ। सर, काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बताइए ना आप लोग। बेसिकली वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑन द सेंटर जो काफ़ी डेडिकेटेड हैं, बच्चों के लिए काउंसिल करते हैं, बच्चों की क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको हम कैरियर ऑप्ट करने के लिए बोलते हैं। रिगार्डिंग इंजीनियरिंग में जाना है उनको, मेडिकल में जाना है, उनके सब किस में वो एक्सेल कर पा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में वो वीक है, कहाँ उनको बेहतर हम करा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उनको कैरियर चॉइस हम प्रोवाइड करते हैं। जस्ट गिवन द एग्जाम्पल, कुछ बच्चे जो हैं 9th में है या 10th में है, वो उनकी बायोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो वी ऑप्ट देम फॉर कि गो फॉर द मेडिकल, और मेडिकल बैकग्राउंड में आप डॉक्टर की तरफ जाने की चीज़ें कोशिश करिए, नीट की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। कमिंग टू द बैकग्राउंड, अगर कोई बच्चा मैथ्स में काफ़ी बेहतर प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा नंबर लेके आ रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो हम उनको कहते हैं, और इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्ट है उनको, तो वी टोल्ड देम कि आप IIT JEE की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें चलती हैं। মই সুভাষ সেনগুপ্তাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। আপুনি আপোনাৰ গোটেই কামটোৱে হৈছে যিহেতু আপুনি ষ্টুডেণ্ট লগত এংগেজ হৈ থাকে, মই তাৰ লগত এটা কথা জানিব বিচাৰিম। বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকৰ তালৈ আহিব, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাক লৈ ভয় থাকিব, উদ্বেগ থাকিব। সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপোনালোকে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব? আপোনাৰ তাত কৰিবলগীয়া কি হ'ব বুলি আপুনি থাকে? হয়, সেই উত্তৰটো মই মহেন্দ্ৰ সিং ছাৰৰ উত্তৰটোৰ লগত মিলাই দিম যে আমাৰ আন একাডেমিত এটা প্ৰচেছ আছে যে আমি এক্সামছক ফ্ৰেণ্ডলি বনাই দিওঁ, এক্সাম ফ্ৰেণ্ডলি বনাই দিওঁ। আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে এক্সাম ফোবিয়াক লৈ, মানে গোটেইটো উল্টাটো তাৰে। আৰু এইটো জেনেৰেল আমি দেখোঁ যে সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো পাৰচেপশ্যন আছে, যিটো ভাৱ আছে পৰীক্ষাক লৈ, সেইটো বহুত নেগেটিভ ভাৱ। কোনেও পৰীক্ষা ভাল নাপায়, কোনেও পৰীক্ষা দি ভাল নাপায়। তাৰ গুৰিতে আছে আমাৰ শিক্ষা প্ৰণালীৰ এটা বহুত ডাঙৰ ভুল। সেইটো হ'ল যে আমি শিক্ষাৰ অৰ্থটো বহুত ভুলকৈ বুজাই দিওঁ। আমি শিক্ষাৰ অৰ্থটো পৰীক্ষাৰ অৰ্থটো শিক্ষাৰ লগত জড়িত নকৰি আমি সেইটো ভাল বেয়াৰ লগত জড়িত কৰি দিওঁ। যে আপুনি যদি পৰীক্ষাত ভাল কৰিছে, তাৰমানে আপুনি মানুহ হিচাপে ভাল বা আপুনি চোকা। যদি আপুনি কৰা নাই, তাৰমানে আপুনি ছাত্ৰ হিচাপে, শিক্ষাৰ্থী হিচাপে বা এজ এ মানুহ আপুনি অকণমান কম। মই বেয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু কম। কিন্তু আমি এটা একাডেমি আমিতো এইটো বস্তু বুজাওঁ যে পৰীক্ষাৰ অৰ্থটো হ'ল যে সেইটো পৰ্যায়লৈকে আপুনি যিখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো কিমান বুজি পাইছে বা কিমান বুজি পোৱা নাই। যদি বুজি পোৱা নাই, কম মাৰ্কছ আনিছে, তাৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে আপুনি অসফল হয়। তাৰ অৰ্থটো ইমানেই যে আপুনি ইমানখিনি জেগা, ইমানখিনি বস্তু শিকিবলৈ আছে। আমি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, শিক্ষাৰ্থীয়ে কম মাৰ্কছ পায়, অসফল হয়, সেইখিনিৰ কাৰণেও আন একাডেমিত যথেষ্ট ঠাই আছে। সিহঁতক বুজোৱা যায় যে অসফল হৈছে মানে ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ আৰু এটা স্ক'প আছে। আৰু যিসকল সফল হৈছে সেইসকল অসফল হোৱাতকৈ বেটাৰ নহয়, আৰু যিসকল অসফল হৈছে সেইখিনি সফল হোৱাতকৈ কমো নহয়। সেইটো মানে আমি বুজাওঁ। আমি পৰীক্ষাৰ অৰ্থটো ভাঙি বুজাওঁ যে পৰীক্ষাৰ অৰ্থ অমুক, তাক ইনফ্লেট কৰি বুজাই নিদিওঁ। এই পাৰচেপশ্যনটো যিটো আছে পৰীক্ষাক লৈ, সেইটো ইনফ্লেটেড পাৰচেপশ্যন এটা আছে। তাৰ গুৰুত্বটো আমি দৰকাৰতকৈ বেছি বনাই থৈছোঁ। সেই বস্তুটো ভাঙি পাতি যেতিয়া বুজোৱা হয় এজন শিক্ষাৰ্থীক, তে অট'মেটিকেলি আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ লগত যিটো জড়িত ভয়, সেইটো বহুতখিনি কম হৈ যায়। আৰু তাৰপিছতো আমাৰ এই ডেইলি প্ৰেক্টিছবিলাক থাকেই। যেতিয়া আপুনি ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গ'ল পৰীক্ষাটোলৈ, তেতিয়া ভয় কোনো स्पेसे ना থাকিল। मैं एक बार आपको महेंद्र सिंह सर का खोले। सर, जो कोर्सेस है आप लोगों का, कोर्सेस और जो स्टडी मटेरियल के बारे में आप लोगों का थोड़ा ब्रीफली बताइए ना। बिल्कुल सर, कोर्सेज तो क्लास 6th से लगाकर क्लास 12 तक के सर। तो 6 to 10 तक में वी से फाउंडेशन,
एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कई सारे पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि या बच्चा भी अगर ये सोचता है कि फर्स्ट आई कंप्लीट माई 12th एंड देन आई शुड स्टार्ट फॉर नीट एंड जेई प्रिपरेशन. दिस इज़ द रॉन्ग मेथड. Actually, they should start well in advance, either if you are in class 8th, 9th and 10th. So this is the right time because यहाँ पे you build up your strong foundation. Foundation अगर आपका कमज़ोर रह जाता है तो then it's a loop of fails actually. Multiple times you been into the failure again and again. So it is very very important that you have to start well in advance so that हर छोटी छोटी बेसिक बातों पर आप concentrate करें. जैसे सर क्लास 9th में जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स दे सेम गेट रिपीट इन क्लास 11th. व्हाट्सएवर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट लर्न इन क्लास 10th वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं क्लास 12th में. तो क्यों ना 9th में ही पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि 11th में क्या आने वाला है, 10th में पढ़ते वक्त 12th की बातों का ध्यान रखा जाए. तो वी एट अनअकैडमी स्ट्रांगली बिलीव इन मेकिंग द फाउंडेशन स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर एंड कनेक्टिंग द हायर साइड स्टडीज थ्रू द ब्रिजिंग. This is one thing. Second is study material. So across India we have 70 plus centers and 60 plus cities. So we have top educators associated with us who is having more than 20 plus years of experience. So we have assigned some assignments to the teachers, and whoever is having experience more than 20 years, they wrote the material. So if any person who is having a great experience in any field, if write down something, so they will just not write down the concept, they will write down the practical things also, where student can make the mistake. What are the things they have to take care while preparing? कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एडिशनल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा so that सवाल गलत नहीं हो. This all you found in an academy module. That is why this will be going to the first choice for sure in Guwahati. जितने भी बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, I would strongly recommend come visit our center and see the study material that we are going to provide you. इतना सुंदर इतना खूबसूरत तरीके से लिखा गया है कि एक एक चीज़ में information is in form of bits and pieces. So dots connect होते होते कब पूरा हो जाएगा खेल खेल में आपको पता भी नहीं पड़ेगा. पूरी आनंदित प्रोसेस होगी. So this is how we are offering sir 6th to 12th in NEET as well as in JEE. So 6th to 10th is we call foundation. ঠিক আছে, থেংক ইউ. আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি পুনৰ ল'ব লাগিব. আমি বাণিজ্যিক বিৰতিলৈ অনুষ্ঠানটোৰ শেষ অংশলৈ উভতি আহিম. অনুষ্ঠানটোৰ শেষ অংশলৈ আমি পুনৰবাৰ উভতি আহিছোঁ. আমি আন একাডেমি সন্দৰ্ভত আজি কথা পাতি আছোঁ. এবাৰ মই অনুষ্ঠানটোৰ শেষ অংশৰ প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ফেজল আদিবৰ পৰা. আপোনালোকে গম পাইছে তেখেত আন একাডেমিৰ যিটো গুৱাহাটীৰ চেণ্টাৰ তাৰ তেওঁ চেণ্টাৰ হেড. গতিকে আমি তেওঁৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম. सर आप लोगों के जो आन एकेडमी के गुवाहाटी का जो सेंटर है उसमें कोर्सेज के अलावा कोई एडिशनल कोई ऐसा कोई सुविधा को देता है क्या स्टूडेंट के लिए? जी सर, जैसे महेंद्र सर ने बताया कि अन अकेडमी हर एक बच्चे के लिए चीज़ें देखता है और वी आर वेरी सेंसिटिव टू द एवरी चाइल्ड राइट नाउ. तो हम बच्चों को क्या करते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स लाइक पब्लिक स्पीकिंग किस तरीके से करना है, आइस ब्रेकिंग सेशंस वो हम वीकली कराते हैं बच्चों को, कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, मोटिवेशन आए, अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाए बेहतर तरीके से, क्योंकि बच्चों में झिझक होती है टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए. ये हम कराते हैं. दूसरी चीज़ें ये हम उनको जो पढ़ाई में है उनको हम ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं सेंटर पे, बट हम उनको एक फैसिलिटी और देते हैं कि जितने हमारे सेंटर्स हैं, जितने टॉप फैकल्टीज़ हैं, बच्चा ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि अच्छा मैं उस टॉप फैकल्टी से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो ऑनलाइन मोड में भी वो चीज़ें पढ़ सकता है. तो ये ऐड ऑन हम बच्चों को करा रहे हैं. और जो 6 से लेकर 10 तक है उनको ओलंपियाड के लिए इस चीज़ों के लिए हम उनको प्रिपेयर कराते हैं कि वो बच्चे रेडी हो जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. एक बार उनके पास बर्डन नहीं आई, जैसे वो IIT में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, तो उनको कॉम्पिटिटिव माहौल देने की कोशिश करते हैं. ये हम नया ऐड ऑन कर रहे हैं अपने सेंटर्स पे और कराते आ रहे हैं. ठीक है सर, थोड़ी फ्री स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए. बिल्कुल सर, क्योंकि जहाँ हमने इतनी सारी बातें करी, दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट एन अकेडमी. इतनी बेहतरीन टीचिंग है, इतने ज़बरदस्त स्टडी मटेरियल है, तो देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन द स्टूडेंट्स माइंड या पेरेंट्स के दिमाग में कि यार फिर तो पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे होंगे. बट अभी पूरे गुवाहाटी और इसके नियर बाय जितने भी सिटीज़ हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पूरे आसाम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और वो ये कि हमने गुवाहाटी का सेंटर अभी इनोग्रेट किया है. तो अभी एक इनोग्रल ऑफ़र है सर. तो 15 फरवरी तक जो भी स्टूडेंट हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करता है 6th क्लास से लगाकर क्लास 12th तक या ड्रॉपर कोर्सेज में,
तो आपको फ्लैट 50% ऑफ है, बट दिस इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड अप टू 15th of February। ঠিক আছে, মই পুনৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে তেওঁলোকে যিহেতু নতুনকৈ দুদিন পূৰ্বে আন একাডেমীৰ গুৱাহাটীৰ চেণ্টাৰটো মুকলি কৰিছে, গতিকে আপোনালোকৰ বাবে এতিয়া এটা সুবিধা আছে। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ এই আন একাডেমীৰ গুৱাহাটীৰ চেণ্টাৰত আহি নামভৰ্তি কৰে, তেওঁলোকৰ যিটো নামভৰ্তিৰ মাচুল সেইটোৰ 50% তেওঁলোকে ৰেহাই পাব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে। মই এবাৰ সুভায়ু সেনগুপ্তাৰ কাষলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যিহেতু আমি ফিজৰ কথা পাতিলোঁ, আপোনালোকৰ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কথা পাতিলোঁ, এতিয়া মূল কথাটো হৈছে শিৱসাগৰৰ তিনিচুকীয়াৰ এজন শিক্ষাৰ্থী আহিবলৈ হ'লে ইয়াত এড্ৰেছটো মেইন, ক'ত তেওঁলোক আহিব, কেনেকৈ আপোনালোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব, সেই সন্দৰ্ভত অকণমান কৈ দিওঁ। আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে 5th ফ্ল'ৰ ময়ূৰ হাইটছ বিল্ডিং ABC ভঙাগড় গুৱাহাটী। সেইটোত আমাৰ গুৱাহাটী চেণ্টাৰটো আছে আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো হৈছে 7099029888। সেইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আমাৰ অফিচৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। আৰু আমিতো আগ্ৰহ কৰোঁ, নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ যে সকলোৱে আমাৰ চেণ্টাৰলৈ এবাৰ আহে, শিক্ষাৰ্থী হওক, অভিভাৱক হওক, যোনে বিচাৰে কিবা ইনকুৱাৰী কৰিব বিচাৰে, সকলো ৱেলকাম, আহক আমাৰ চেণ্টাৰলৈ। আৰু আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আমাৰ আপাৰ টিকাৰত আমি তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ৰ যিটো তেওঁলোকৰ চেণ্টাৰটোৰ যিটো ঠিকনা সেইটো আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আপোনালোকে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ আৰু ঠিকনাটো আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব, তাৰ পৰা আন একাডেমীলৈ আপোনালোক আহিব পাৰিব। মই আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম সুভায়ু সেনগুপ্তা, আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্টত এইটো প্ৰথম নে আৰু ক'ৰবাত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ আছে? আমাৰ এইটো অসমত প্ৰথম, নৰ্থ ইষ্টত হয়। নৰ্থ ইষ্টত আগৰতলাতো আমাৰ এটা আন একাডেমী চেণ্টাৰ আছে। আৰু অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ আছে? আছে, আমাৰ ডেফিনেটলি আছে। আমি প্ৰথমতে গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিমানখিনি সুবিধা পাৰোঁ কৰাই উঠি আমি এক্সপাণ্ড ডেফিনেটলি কৰাৰ আমাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে। ओके सर, एट लास्ट कोई मैसेज होगा क्या स्टूडेंट, आसाम के स्टूडेंट के लिए जो नीट और JEE का प्रिपेयर कर रहे हैं अभी? बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं थ्रू ऑनलाइन, और यहाँ के बच्चों में मैं काफ़ी पोटेंशियल देखता हूँ। एक सिंसियरिटी है यहाँ के बच्चों में, जो कह दो उसे मान के एग्जीक्यूट करने की एक आदत मैंने देखी है, जितना मैंने समझा यहाँ के बच्चों को। तो आप लोगों से बेटा बस एक रिक्वेस्ट ये है कि अब आपके शहर में, आपके शहर के पास में अनअकैडमी का सेंटर आ गया है। आसाम के बेस्ट एजुकेटर्स का सेट आपके पास है, अनअकैडमी का बेस्ट स्टडी मटेरियल है, पूरी डीप टेक्नोलॉजी आपके साथ एसोसिएटेड है। सो नाउ देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज़। अब वी आर लुकिंग फॉर ऑल इंडिया रैंक 1, और अगर वो गुवाहाटी से होगी तो पर्सनली मुझे बहुत खुशी होगी कि आई केम हियर, आई स्पेंड अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम हियर, एंड इस सेंटर से फिर बहुत अच्छी रैंक आई। आई विल कम पर्सनली अगेन एंड सेलिब्रेट योर रिजल्ट। सो आई वॉन्ट यू शुड टेक द इनिशिएट, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। मेहनत करते हैं आप और हम साथ मिलके, फिर आपका रिजल्ट सेलिब्रेट करते हैं। আমি তিনিওগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনুষ্ঠানটো সামৰিব লাগিব, তেওঁলোকে অত্যন্ত ব্যস্ততাৰ মাজতো আহি আমাক সময় দিলে। মহেন্দ্ৰ সিং, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ফেজল আদিবক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সুভায়ু সেনগুপ্তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অনুষ্ঠানটো সামৰিব লাগিব। আমি আশা কৰিছোঁ আন একাডেমীয়ে যিটো তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা বা যিটো সপোন লৈ অসমৰ প্ৰথমটো চেণ্টাৰ তেওঁলোকে গুৱাহাটীত মুকলি কৰিছে, সেই পৰিকল্পনাত তেওঁলোক সফল হ'ব। আৰু আন একাডেমীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি আছিল ইয়াৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত, অসমৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিদৰে অনলাইনত তেওঁলোকক আদৰি লৈছিল, সেই ধৰণৰ এতিয়া অফলাইন কোচিং যিহেতু তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হৈছে অসমত, গতিকে আন একাডেমীৰ সেই গোটেই পৰিকল্পনাটো সফল কৰি তোলাত বা পৰিকল্পনাটো সফল ৰূপায়িত কৰাত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহায় কৰিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহিব বুলিও আমি আশা কৰিছোঁ। মই আকৌ কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ ঠিকনাটো আমি আপাৰ টিকাৰত দি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে তাৰ পৰা ঠিকনাটো সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ সন্তানটো বা শিক্ষাৰ্থীসকলে যিদৰে JEE বা নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সপোনটো পূৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আন একাডেমীৰ কাষ চাপিব পাৰে। নমস্কাৰ।